Rule 267. Rule 267 of Rajya Sabha Rule Book, which allows for the suspension of a day's event business to debate the issue suggested by a member, has become a bone of contention in the upper house. Not a single notice under the rule moved by the opposition has been accepted in this winter session of parliament. Rule 267 है क्या? Rajya Sabha defines Rule 267 under suspension of rules as an instance where any member may, with the consent of the chairman, move that any rule may be suspended in its application to a motion related to business listed before the council of that state, and if the motion is carried, the rule in question shall be suspended for the time being. Basically कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई question of importance आ गया है तो बाकी चीज़ें suspend हो सकती है. It is simply the provision for a house member to request the chairman to suspend issues listed out for discussions on a particular day to deliberate a separate issue. भाई दंगे हो जाए, फसाद हो जाए कहीं पे कंट्री में बहुत ज़्यादा, तो बाकी इश्यूज़ को आपको साइडलाइन करना पड़ेगा. Rule shall not apply when a specific provision already exists for the suspension of rule under a particular chapter of the rules. Usually such requests are not accepted by the chairman with 3 exceptions in 2015 and 2016. तो यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि आपसे बोला जा सकता है रूल 267 के बारे में कि क्या ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट किया गया. लास्ट टाइम द रूल वॉज यूज टू रिक्वेस्ट डिस्कशन वॉज इन नवंबर 2016. द इशू वॉज इन क्वेश्चन वॉज डिमोनेटाइजेशन. तो डिमोनेटाइजेशन तो बहुत बड़ा मुद्दा था, उसके लिए बनता है. अभी इस समय ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा आया नहीं है, तो रूल 267 के होने का कोई सेंस नहीं है ज़्यादा अप्लाई होने का. कर्नाटका हाइक SC/ST कोटा. Karnataka government tabled a bill in the Legislative Assembly to increase reservations for scheduled caste from 15% to 17% and scheduled tribes from 3% to 7% in the state. While the SCs make up 16% of the state's population, STs continue 6.9%. Concerns क्या रेज हुए हैं? Decision breaches the 50% cap on quotas and may be challenged in the judiciary. तो ये कर्नाटका का डिसीजन है इंटरनल जॉब्स के लिए जो स्टेट जॉब्स हैं. वाई द कोटा हैज़ बीन इंक्रीज्ड वाइल द परसेंटेज ऑफ SCs and STs इन द स्टेट हैज़ इंक्रीज बट द रिजर्वेशन परसेंटेज हैज़ नॉट इंक्रीज्ड इन लाइन विद इट. इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है? बेटा कुरुबा कम्युनिटी फ्रॉम कर्नाटका हैव बीन एडेड टू द ST कैटेगरी लिस्ट. Community is involved in the collection of forest produced and bamboo and follows animism, nature worship. तो बेटा कुरुबा कम्युनिटी कहाँ की है? कर्नाटका की. They live in the hilly areas of नीलगिरीज. यहाँ पे हमने भी बात की थी ना, वयनाड, मुदुमलाई, ये सारे बांदीपुर, ये सारे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का, तो ये वही नीलगिरीज हैं. Belong to the Hindu caste native to the Indian states of Karnataka, Tamil Nadu, Andhra, Telangana. Now, they are generally believed to be the descendants of the Pallavas. That's very interesting. Descendants of the Pallavas, Beta Kuruba community. Consanguineous marriages like cross-cousin marriages are preferred among the Kurumbas. तो ये important है. Then many states breach ceiling. Reservation being extreme form of protective measure should be confined to minority of seats. Even though the constitution does not lay down any specific power, the principle of balancing equality ordains reservation not to exceed 50%. ये इंदिरा सानी जजमेंट का हिस्सा है, पर ये काफ़ी बार वायलेट हुआ है. Since the 1992 order, several states have passed laws breaching 50% ceiling. तो इसमें ये बोला गया था कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन हो तभी आप इसको ब्रीच करें, वरना ना करें. लेकिन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र, MP, UP, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सभी ने 50% रिजर्व सीट्स का जो थ्रेशोल्ड है वो पार कर दिया है. Many of these laws have either been stayed or are facing legal challenges. SC was hearing challenge to Maharashtra government decision to extend quotas to Maharashtra. अब महाराष्ट्र में मराठास को रिजर्वेशन देना कितना जेन्युइन है, कितना ठीक है, क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है? नहीं, ये सब सोचने वाली बातें हैं ना. देन कर दें इसको, ग्रीन कर दें. ओके, सेव किया मैंने, सेव क्यों नहीं हो रहा है? ओके. Short transfer of cess funds. Scrutiny of cess and levies during 2020-21 by CAG in its financial audit of accounts of the union government revealed cases of short or non-transfer of collected amounts. A transfer involves the movement of assets, monetary funds and or ownership rights from one account to another. तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई है कि शॉर्ट और नॉन ट्रांसफ़र ऑफ कलेक्टेड अमाउंट्स, थोड़ा सा अमाउंट खुद रख के बाकी कर दिया ट्रांसफ़र, या फिर
ट्रांसफ़र ही नहीं किया. सो एग्जाम्पल्स ऑफ शॉर्ट ट्रांसफ़र क्या है गिवन बाय कैग, जो कैग ने एग्जाम्पल्स दिए हैं. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष मस्क. 4% tax was levied as health and education cess from Finance Act 2018. Despite the fund being approved in 2017, it is yet to be operationalized due to the non-financialization of its accounting procedure. National Mineral Trust Revi, a percentage of royalty paid by the mining companies is passed on to this trust. A part of this fund was also short transferred. Then Universal Access Levy cess is charged to provide quality and affordable mobile and digital service across the rural and remote areas of the country under the BharatNet project. Previously, government had said that they have overutilized the funds. Example, road and infrastructure cess stood at nearly 1.95 lakh crore, but the amount utilized was over 2.51 lakh crore. Debt में चल रहे थे. Cess and surcharges account for 28.1% of gross tax revenue against 18.2% in FY 2020. Cess is not a permanent source of revenue and it is discontinued when the purpose is filled. अब it can be levied both on direct and indirect taxes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनकम टैक्स पे भी कल को सेस लगाया जा सकता है और अपना नॉर्मल टैक्सेस पे तो लगाया जा ही सकता है. आर्टिकल 270 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन allows central government to exclude cess from divisible pool of states, thus depriving the states of any cess revenue. Successive financial commissions have said they should be brought under the divisible pool. Currently, all the cesses except GST are utilized by the central government in itself. ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, देख सकते हैं.